Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 सीबीसीएस ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू बढ़े मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें टाइम डिलेशन विषय रे पढिबा देख या पूर्वर जिते साइमल्टेनिटी आउ ऑर्डर ऑफ इवेंट्स विषय रे हमें पढ़ुला तो हमें देखुला जदि दुईटा ऑब्जर्वर मूव करूचंती रिलेटिव टू ईच अदर ताहले गोटे ऑब्जर्वर को सपोज दुईटा इवेंट्स एका संगे माने साइमल्टेनियसली घटुची जदि देखा जाउची ताहले आरो गोटिक ऑब्जर्वर को सेटा अलगा अलगा टाइम रे होउची बढ़िया देखा जिवो ओके सो like space interval the time interval between two events is also different for two observers जेमती कहली who are moving relative to each other so एथि पई हमें कंसीडर करिबा दुईटा ऑब्जर्वर सपोज at position O and O dash in the frame of reference or inertial system S and S dash suppose initially ए दुईटा जाक फ्रेम रेस्ट रे अछंती with respect to each other एबे एई दुई ऑब्जर्वर कोन करचंती ना परस्पर पाखरे गोटे घड़ी रखिचंती ओके दे हैव देयर ओन क्लॉक्स दे नाउ सिंक्रोनाइज देयर रेस्पेक्टिव क्लॉक्स ओके माने टाइम इंटरवल जेमती एका संगे घटिबो से हिसाब रे सिंक्रोनाइजेशन दुईटा जाक घड़ी को से माने कर देले तांको पाखरे जो रखिचंती नाउ दे एग्री दैट द टाइम इंटरवल बिटवीन एनी टू इवेंट्स एज मेजर्ड बाय देयर ओन क्लॉक्स इज सेम ओके सो एतिकी जिनस हे गला परे सपोज क्लॉक जोटा हमर रेस्ट फ्रेम एस रे अछि दिस विल गिव सिग्नल्स एट रेगुलर इंटरवल्स एंड नाउ एस डैश फ्रेम जोटा एटा एबे मूव करिवो टू द राइट माने along the positive x axis with a uniform velocity v with respect to s okay now the observer o जोटा s frame रे अछि he keeps his clock with him at a fixed point suppose point hela x1 in his system okay ता निज सिस्टम रे and measures the time interval माने दुईटा जो इवेंट घटुची से दुई इवेंट भितरे टाइम इंटरवल को ये कहूची ना t0 ओके सो एटी दुईटा इवेंट बा दुईटा सिग्नल रो ये टाइम इंटरवल बाहर कला which are occurring at times t1 and t2 in each frame so t0 will be t2 minus t1 so ये हला s फ्रेम रो ओके सो देखो एटी फिगर मध्य एई बढिया ही ओके सेम फिगर जोड़ा में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन देन साइमल्टेनिटी रे भी देखुतला सो s डैश फ्रेम मूव करूची विथ द वेलोसिटी v along the positive x axis अच्छा एबे एई s डैश फ्रेम रे जदी हमें देखिबा let the time registered by the observer o dash okay in the system s dash between the same two events से समान दुईटा जाक इवेंट को ये टाइम रेकॉर्ड कला t1 dash आउ t2 dash okay now s dash हमें जानिछु it is moving in the direction positive x axis with a uniform velocity v okay with respect to s अच्छा now according to Lorentz transformation हमें टाइम रो जो ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट्स पाई सरछु okay so t1 dash will be this much t2 dash will be this much अच्छा now एबे कौन करिबा t2 dash minus t1 dash बाहर करिबा which is nothing but the time interval as measured by the observer o dash okay यार वैल्यू हमें पुट कर देला अच्छा now the clock in the system s remains fixed at the point x1 ओके क्लॉक तो मूव करूनी ना क्लॉक जदि हमें सेही फ्रेम s रे देखिबा ताले से गोटे पोजीशन रे ही अछि which is x1 so एठी x2 और x1 दुईटा जाको समान हेबो ओके सो दैट t2 dash minus t1 dash एठी एई टर्म टा 0 ही जिवो ओके सो t2 minus t1 divided by 1 minus b square by c square रो स्क्वायर रूट अच्छा
Now the observer O dash, which is moving in his inertial system S dash, he measures the time interval जोटा होची t2 dash minus t1 dash, याको आमे कहबा सपोज t. ओके ताले t2 minus t1 ऑलरेडी आमे पाइथिलु t0. ओके सो ये कौन कहला ना t2 dash minus t1 dash बाहर कला, which is t, the time interval between the same two events. ओके सो ताले याको अबे आमे ए जो ऊपरे रिलेशन टा पाइला this one. ओके एठी आमे यदि पुट करिबा ताले t will be equal to t0 by square root of 1 minus b square by c square, which is the required relation जोटा टाइम डिलेशन को सूचौछि. सो एठी आमे देखिबा को पाइबा जे जदि गुटे घड़ी मूव करूछि, ओके देन इट विल appear to run slow. सो एमती केमती होउछि, ओके यार आंसर टा एठी देखो डिस्क्राइब करिछि. सो ऑलरेडी आमे डिस्कस कला जे जो ऑब्जर्वर O dash who is moving in the system S dash, he measures the time interval t between the same two events, for which the observer O in the frame S measures the time t0. यार रिलेशन टा पहला कौन t equal to t0 by square root 1 minus b square by c square है. अच्छा ये जो फैक्टर तले तमे देखुच डिनोमिनेटर रे square root of 1 minus b square by c square, this will play the major role. Okay because आमे जानिछु ए जो फ्रेम S dash मूव करूची with a velocity v, this velocity is obviously less than the velocity of light c. तेणु करी ए जो 1 minus b square by c square, this must be less than 1 or t must be greater than t0. Okay hence the observer S dash, ओके माने जोटा कि तुम्हारा मूविंग ऑब्जर्वर एस डैश मेजर्स ए लॉन्गर इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन द टू इवेंट्स विथ हिज क्लॉक एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू हिम. मन रख क्लॉकटा ताकू जना पड़ुची जे रेस्ट रे अछि विथ रेस्पेक्ट टू हिम, बट द क्लॉक अलोंग विथ द ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग as they are placed in the moving frame S dash. Okay or in other words, a clock in the frame S appears to go slow to an observer in the frame S dash who is in motion with respect to S. Okay so এই phenomenon को ही time dilation कहा जाए. ओके गोटे मूविंग क्लॉक टे जना पड़ुची जे सेटा स्लोली रेकॉर्ड करूची टाइम. ओके दिस फेनोमेनन इज नोन एज टाइम डिलेशन, माने डिले ही जाउची. ओके सो इफ देयर आर टू ऑब्जर्वर्स who are in relative motion with each other, then each observer would find that the other moving observer's clock is running slowly. Okay so से हिसाब रे ऑब्जर्वर O dash एक्चुअली से निजे मूव करूची किंतु ताकू जना पड़ो कौन जे ऑब्जर्वर O टा मूव करूची. ओके से ताठू दूर को जाउची सो दैट ता पाखरे जो घड़ीटा अछि, ओके ऑब्जर्वर O पाखरे जो घड़ीटा अछि, ऑब्जर्वर O dash ताकू जना पड़ो जे ता घड़ीटा स्लो चलुची. सेम जिनस ऑब्जर्वर O भी देखिबो जे ऑब्जर्वर O dash पाखरे जो घड़ी अछि दैट इज रनिंग स्लोली. thus the consequence of time dilation is reciprocal. ओके दुई साइड रू जना पड़ो जे अन्य जनक पाखरे थिबा घड़ीटा स्लो चलुची. ओके एज एन एग्जांपल ऑफ फेनोमेनन ऑफ टाइम डिलेशन, सपोज आमे एठी गोटे एग्जांपल नबा जे वेलोसिटी को कहिला आमे 0.98 c, ताले स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर रो वैल्यू आसी जिवो 0.2 और t रो वैल्यू आसी जिवो 5 t0. ओके ताले देखो दुईटा जाको पूरा पूरी डिफरेंट आसिला. और इन अदर वर्ड्स, if the moving observer in the inertial frame S dash measures a time interval for 5 seconds, okay, between two events by his own clock, then the interval between the same two events जोटा कि से measure करिवो on the clock of the stationary observer in the frame S, this will be now 1 second and vice versa. okay माने reciprocal भी हेबो जोटा ये जो एस फ्रेम रे थिबा ऑब्जर्वर जदि 5 सेकेंड मेजर कला ताले ताकू लागिबो जे एस टेस फ्रेम रे जो घड़ीटा अछि सेटा मेजर करा जिवो जे सेथरे 1 सेकेंड होउची. ओके सो ए हिसाब रे हमें देखला जे दिस इज योर टाइम डिलेशन. अच्छा एठी हमें दुईटा टाइम
को देखा पाइला गोटे आसला तुमर टी आ गोटे आसला t0 ओके सो ये दुईटा टाइम को कह जाए प्रॉपर आ नॉन प्रॉपर टाइम ओके सो जो आम देखुला जे ऑब्जर्वर O in the frame S he was measuring the time interval that is t0 equal to t2 minus t1 between the two events by a clock which is fixed in each frame at a position x1 whereas the time between the same two events which was measured by the moving observer O dash was t equal to t2 dash minus t1 dash or t2 minus t1 by square root 1 minus b square by c square এটি यार ভ্যালুটা আসছে t0 ओके सो এটা মুভিং অবজর্ভার এটা মেজর কলা হু ইজ মুভিং উইথ a velocity v along the positive x direction with respect to s dash তাহলে প্রপর আউ টাইম ये নন প্রপর টাইম কইলে কোন the time interval between two events which occur at the same position measured by a clock in the inertial frame in which the event occur is called proper time ओके सो जो टाइम इंटरवल आम दुईटा इवेंट पाई ऑब्वियसली दुईटा इवेंट जदि घटुची सो से दुई इवेंट भितर जो टाइमटा आम रेकर्ड कला से टाइम रो डिफरेंस बा इंटरवलटा होची योर टाइम इंटरवल ओके तो आम कौन करवा ना सेम पोजिशन रे आम नहीं कि से क्लॉक को जदि आम से इनर्शियल फ्रेम रे ओके मे बी से रेस्ट फ्रेम हो कि मूविंग फ्रेम हो ओके इवेंट आउ तुम क्लॉक दुईटा जाक गोटे फ्रेम रे जदि अच्छी ताले आमे जो टाइमटा मेजर करवा दैट विल बी प्रॉपर टाइम ओके तापर नॉन प्रॉपर टाइम कौन द टाइम इंटरवल बिटवीन सेम टू इवेंट्स मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर फ्रॉम ए inertial frame which is moving with respect to the clock is known as non proper or relativistic time माने क्लॉक अलग गोटे फ्रेम ऑफ रेफरेंस रे अछि इवेंट्स आ गोटे फ्रेम रे होउची ताले से जो क्लॉकटा टाइम रेकॉर्ड करिवो दैट विल बी नॉन प्रॉपर और रिलेटिविस्टिक टाइम आ गोटे देख ये गोटे कंडीशन कहूँ जदि v बा वेलोसिटी इज वेरी वेरी लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट माने v वेरी वेरी लेस देन c देन आम जाचु जे एबे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशनटा रिड्यूस करी जाए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्लासिकल ट्रांसफॉर्मेशन को सो यही कंडीशन रे कौन हम ना तुम एटी टी आउ टी जीरो जो आम टाइम इंटरवल पाला ये दुईटा सामान आसीज ओके सो ये जो टाइम डिलेशनटा राइज करुच्चे कनसेप्टटा केतेबेले व्हेन द वेलोसिटी इज अप्रोचिंग और कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट ओके सम ऑफ द कंक्लूजन्स नाउ लेट अस सी पॉइंट बाय पॉइंट देखो ये फास्ट पॉइंट कहूँ आम जो टाइम डिलेशन रिलेशन पाइला से v स्क्वायर टर्मटा अच्छी एज v स्क्वायर इज इनवॉल्व सो दैट द रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइन ऑफ v माने लेफ्ट आड़े मूव करूँ कि राइट आड़े मूव करूँ ता उपरे आउ डिपेंड करिवो नाही बिकॉज v स्क्वायर अच्छी और द ऑब्जर्वर इन ईच सिस्टम thinks that the clock in the other system is running slow so time dilation is reciprocal in nature तापरे सेकेंड पॉइंट कहूँ जदि ये वेलोसिटी v रो वैल्यू जदि इक्वल टू दैट ऑफ लाइट वेलोसिटी होगा माने v इक्वल टू c होगा ताले 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर वैल्यू केते हबो 0 हो सो दैट द टाइम इंटरवल t विल अप्रोच टू इन्फिनिटी दैट मीन्स the observer in frame s dash will find that the clock in the frame s is infinitely slow माने कोन it is not running at all ओके सो माने गोटे घड़ी ताकू देखा जो ये टोटाली चलूनी बट एटा इम्पॉसिबल जिनस ओके हेंस वी कैन से नो मटेरियल बॉडी कैन एवर मूव विथ ए वेलोसिटी ग्रेटर देन दैट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट ओके तापर थर्ड पॉइंट रे कहूँ एवरी सिस्टम कैन हैव इट्स प्रॉपर और लोकल टाइम ओके सबू सिस्टम रो निजर निजर गोटे प्रॉपर लोकल टाइम अच्छी बट देयर इज नो एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड टाइम फॉर ऑल द सिस्टम्स मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर ओके सो जदि सबू जदि सिस्टम को आम कनसीडर करवा व्हिच आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर ताले गोटे एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड टाइम बोली किछि नाही ओके सबू सिस्टम रो गोटे गोटे निजर निजर प्रॉपर लोकल टाइम अच्छी तापरे फोर्थ पॉइंट रे एठे जदि आम फ्रीक्वेंसी देखिबा
फ्रीक्वेंसी माने हमें जानिछु इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. सो जदि f 0 हो गला नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए प्रोसेस इन द फ्रेम s आउ f हो गला ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इन द फ्रेम s डैश ताले रिलेशन एबे कोन हबो f इक्वल टू f0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर बाय c स्क्वायर. ओके एटा केमती आसिला ए रिलेशन सिंपली जो हमें टाइम रिलेशन टा पाइथिला ताको हमें दुई साइड रे इनवर्स कर दबा. ओके सो दैट फ्रीक्वेंसी हमें पाई जिबा. दैट मीन्स এই রিলেশন জনা পড়ছি যে a spectral line when observed with a spectroscope relative to which the atoms emitting lines are in motion, then it should show a slight displacement towards the red end. Okay, red end mane the end having longer wavelength or shorter frequency. ତେଣୁକରି shorter frequency ଆଡ଼କୁ shift କରିବ. Okay, displacement ହେବ slightly as compared with the lines from the stationary atoms. Okay, अच्छा these are some of the conclusions. एबे ये जो टाइम डिलेशन रो आमे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी देखि परिबा although it is not in your syllabus but एटा जस्ट तुमरो for the sake of your knowledge एटा टिके जानि रखो. सो जो टाइम डिलेशन आमे देखिला ताकू आमे लैबोरेटरी रे भी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करि परिबा. ओके सो यही जिनस किछटा कंडीशन सेटिस्फाई करने को पड़ो. नंबर 1 कहूँ द बॉडीज मस्ट मूव विथ रिलेटिविस्टिक स्पीड v. तापर सेकेंड पॉइंट द इवेंट्स ऑकरिंग इन बॉडीज शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ v. देन थर्ड पॉइंट द टाइम इंटरवल बिटवीन द इवेंट्स शुड बी sufficiently short so that the events may occur within a reasonable short travel of bodies. Otherwise the laboratory necessary will be inconveniently long. Okay नले जो laboratory हमको दरकार पड़ुची आहरी बहुत माने बेसी लंबा हे जिवो तार स्थानटा which will be inconvenient. Okay तेणु करी it should be very short events. Okay so एतिकी कंडीशन satisfy कला पोरे आमे देखिबा एठी एग्जांपल रे आमे किछटा न्यूक्लियर एलिमेंटरी पार्टिकल्स रो जो लाइक योर पाई मेजन देन म्यू मेजन तांकर डीके प्रोसेस को देखिबा. सो एठी कहूची सम ऑफ द न्यूक्लियर एंड एलिमेंटरी पार्टिकल्स सेटिस्फाई दीज थ्री कंडीशन जोटा हमें ऊपर देखिला एंड दे अंडरगो सम ट्रांसफॉर्मेशन with a proper lifetime that is t0 which is independent of their speed and they can be produced with large speeds so that their non-proper time jota hochi t. Okay moving frame ro okay as measured by the laboratory frame may differ from the proper time t0. Okay so eti pai first example ame dekhiba gote mu1 ba mu meson ro jota gote elementary particle. देख गोटे म्यू1 बा म्यू मेजन रो मीन लाइफ टाइम होची 2.2 into 10 to the power minus 6 सेकेंड. ओके इन ए फ्रेम इन व्हिच इट इज एट रेस्ट. ओके ये जो फ्रेज टा बहुत इंपोर्टेंट माने द क्लॉक एंड द पार्टिकल बोथ आर इन द सेम फ्रेम. ओके से जिनस एठी कहूची जदि अलगा फ्रेम रे रहि गला ताले ए टाइम टा बढ़ी जिवो. ओके से जिनसटा हमें देखिबा आकु. नाउ व्हेन कॉस्मिक रेज फॉल ऑन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर. Okay as you can see in this figure these are the cosmic rays, they are falling on the upper part of the atmosphere. Then the pi mesons are produced and they decay with very short life and they are converted to mu mesons. Now the velocity of mu mesons or muons should be less than the speed of light. Okay so that the expected distance which are traveled by them should be less than 2.2 into 10 to the power minus 6 into c because तांकर mean life time होची ए जो 2.2 into 10 to the power minus 6. so maximum velocity यार light velocity पर्यंत भी पहुंची पारिबनी. so maximum जदि मने करो जे light velocity ये move करूची ताले distance expected distance obviously the time into your velocity of light एतिकी ही distance ये फॉलो करि परिबो. याकु जदि हमें कैलकुलेट करिबा c रो वैल्यू 3 into 10 to the power 8 पके दबा then it will be 0.66 kilometer. Okay thus in the absence of any dilation effect माने time dilation effect the mu mesons
should not travel a distance greater than 0.66 kilometer. এটা আমি theoretically বাহার করে দিলাম, and hence there should be no possibility for these mu measures which are created at the top of the atmosphere to reach the earth surface, because এই atmosphere ରୁ earth surface କୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆହୁରି ବେଶୀ distance cover କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଦେଖ ଡିକେ କରିଗଲା 0.66 କିଲୋମିଟରରେ। ଓକେ, so a distance is nearly about 10 kilometer এই जो atmosphere रो earth surface को, but এটা तो theoretically ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲା। experimentally କ'ଣ ଦେଖାଗଲା? experimentally it was found that on the earth surface an appreciable number of mu measures can be detected after traveling about 10 kilometer through the atmosphere। so ଏଟା କେମିତି ହେଲା? okay, so ଏଇ ଜିନିଷଟା possible ହେଉଛି କେମିତି ନା time dilation ଦ୍ୱାରା। okay, only when we consider the lifetime of these fast mu measures to be much longer than the measured lifetime of a mu measure which is at rest। okay, rest frame रे थिबा mu measure रो जहाँ lifetime हेबो गोटे moving mu measure बा fast moving mu measure तारो time टा अलगा हेबो। okay, the mu measures of cosmic rays which are detected on the earth surface, they have an energy of the order which is corresponding to your velocity v equal to 0.999 c। okay, very much nearly to the velocity of light, or this gamma, এটি gamma মানে কোন? এটা হচ্ছে 1 by 1 minus v square by c square ର square root, याको हमें gamma नउछु। यार वैल्यूटा 30 आसीबो। so that average life according to the special theory of relativity जोटा हमें पाइला जो time dilation रो, then t equal to देखो t0 into this much এই relation आस्तला, एठी हमें এই वैल्यूटा को पुट करिवा, we get 6.6 into 10 to the power minus 5 seconds। okay, hence the distance traveled by these mu measures will be how much? This is the time and the velocity product which is nearly 20 kilometers, so that they can reach the earth surface very easily। okay, এটা गोटे experimental verification देखिला। आ गोटे सेमती second example आमे देखिबा, एठी आमे pi measure रो consider करिबा। okay, high energy particles which are produced by a synchrocyclotron give rise to pi plus measures which are moving with a velocity again very much comparable to the velocity of light which is 0.99 c when they strike a target। okay, now to verify experimentally the time dilation as given by the theory of relativity, एठी हमें कौन करिबा, the flux of these pi plus measures was measured at two places। okay, दुईटा जगह रे हमें measure करिबा such that they are 30 meters nearly apart। now the pi plus measures decay with lifetime, हमें यदि यार decay lifetime देखिबा, it is 1.8 into 10 to the power minus 8 seconds, so that the time taken by the pi plus measures to travel a distance of this gap 30 meters will be how much? This is measured by an observer at rest in the laboratory, then it is given by t equal to the distance divided by the velocity। so it is found out to be 10 into 10 to the power minus 8 seconds approximately। अच्छा, जदि capital N0 होगला number of pi plus measures in the beginning और n होगला after traveling a distance of this 30 meters। okay, that is after a time t। ताले आमे एठी fractional flux बाहर करि परिबा, n by n0 is equal to half to the power capital T by small t, from which you can calculate this n by n0 कहीं की, because ये जो capital T by small t यार वैल्यू आमे इजीली पुट कर देबा। ओके, एटा एसची कैपिटल टी रो वैल्यू आ स्मॉल टी आमे देखुतला जो लाइफ टाइम ता थिला 1.8 into 10 to the power minus 8। सो यार रेशियो आसी गला 5.6। ओके, ताकू एबे आमे पुट करिले n by n0 ए जो फ्रैक्शनल फ्लक्स यार वैल्यू आसीबो अराउंड 2% बा 2 by 100। that means the flux should fall to 2% of the original value। ହେଲା, এটা ଆସିଲା again theoretical, किंतु actual observation by experimentally कौन देखा जाए, the flux was found to be nearly 60%
of the actual original value. So it became again due to time dilation. Okay, so this can be explained by calculating the proper time, that is t0, in the moving frame of this pi plus measure. And according to the theory of relativity, जोटा आम टाइम डिलेशन भैल्यूटा पाइथिला. ओके, सो t0 रो वैल्यू एबे केते हबो इन रिलेशन टू, एठी देखो t रो वैल्यू आमे एतिकी पुट कला, देन 1 माइनस b स्क्वायर बाय c स्क्वायर रो स्क्वायर रूट को पुट कला. सो t0 रो वैल्यू आसिला 1.4 into 10 to the power minus 8 seconds. याकू एबे आमे यूज करिबा जो फ्रैक्शनल फ्लक्स कैलकुलेशन पाई. सो ड्यूरिंग दिस टाइम t0 you have the ratio t0 by t found out to be 0.78. ताले fractional flux केते इगला n by n0 याको put करिबा, so that it is nearly coming out to be 60%. Okay, so this is the reason. So it is clear from this that the experiment which is performed in the laboratory and the measurement is done, so that the time taken by this pi plus measure to travel this gap of 30 meter is 10 into 10 to the power minus 8 seconds, whereas the pi plus measures themselves measured the time as 1.4 into 10 to the power minus 8 seconds. This is the proper time. Okay, so this verifies the experimental verification of this time dilation. Okay, thank you.